Hi, we will discuss about fully convolutional network, that is FCN, in a very brief way, but we'll focus all the important steps included here. Right now, you can see that this is a kind of segmentation we did for this original ovarium images, right? This is an original ovary tumor detected image. Tumor is there. Now we try to segment the tumor with different algorithms. I'm not going to resolve them, but let me show you the result of this FCN segmentation. FCN is fully convolutional network. So you can see that properly the segment is being detected, means it is detecting or it is isolating the tumor, right? So it's a very good deep learning technique that we always suggest for this type of deep base, means in case of medical images to detect tumor or its stage is very crucial, and we have to do that very carefully. So I can suggest that deep learning based FCN segmentation is very important one or a recommended one. So let's try to learn how it works. So you already got this, that this FCN, fully convolutional network, is a type of deep neural network architecture, and it is designed for pixel-wise tasks like image segmentation. हम क्या बोल रहे हैं? Pixel-wise tasks, right? Pixels को segregate कर रहे हैं हम, right? Pixels को grouping करके हम उसका क्या बना रहे हैं? Segment बना रहे हैं. Where every pixel in an image is classified as for example tumor versus background. ठीक है, इसका steps देखते हैं. What are the steps of this algorithm? First, as usual, we need to input that image. Like this is in this case, we are inputting one ovary scan image. Then second step is the convolutional layers, and this layer is used to extract special features. Special features क्या क्या होता है? जैसे आपका edges हो गया, shapes हो गया, and this is as it is like we do in CNN, right? Convolutional neural network. So this is the second step. But the third step, see, no fully connected layers. So जो typical CNN में होता था, unlike typical CNN, FCNNs only use convolutional layers, so they can take images of any size. ठीक है, CNN में हम ये इसमें फुली कनेक्टेड लेयर्स यूज करते हैं, बट यहाँ हमने सिर्फ कन्वोल्यूशनल लेयर यूज किया. रीजन एक ही है, ताकि हम इमेजेस, कोई भी इमेज साइज हम ले सके, मतलब वी कैन इनपुट एनी इमेजेस ऑफ एनी साइज, राइट? So remember, no fully connected layer in the case of FCN. Then, as usual, downsampling means pulling layers reduce image resolutions, like encoder, and upsampling, or you can say deconvolutions. So restore resolution using transpose convolution decoder part to map features back to original size. ये दो स्टेप तो हम करते ही हैं, right? This is an mandatory part. डाउनसैम्पलिंग फॉर एनकोडिंग, अपसैम्पलिंग फॉर डिकोडिंग. ठीक है, एक में इमेज रिजोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं और एक में फिर से वापस ओरिजिनल साइज में ले आते हैं. देन पिक्सल वाइज प्रेडिक्शन. Each pixel is assigned a class level, like either it is a background or it is a tumor. Sorry. So these are the steps. ठीक है, इनपुट कन्वोल्यूशनल लेयर जो मैंडेटरी पार्ट है, नो फुल्ली कनेक्टेड लेयर, right? Then downsampling, upsampling, and we have last pixel-wise prediction. ये टर्म्स को मैं फिर से दिखा देता हूं आपको कि convolutional layers, these layers slide small filters, जिसको हम kernels बोलते हैं, right? Over the image to detect patterns like edges, textures, shapes, and क्यों हमें ये यूज करना पड़ता है? Why we need it exactly? Because early layers detect the low level features. Exact low level इसलिए हम बोल रहे हैं, देखो edges क्या करते हैं? Surrounding the tumor, वो particular edges हो गए, right? Blobs,
तो ये सबसे हमारा एग्जैक्टली एक लेयर तो आपका समझ में आ ही गया होगा कि इस पर्टिकुलर एजेस से ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है सराउंडिंग है। तो दिस पार्ट ऑफ वर्क वी डू इट इन द कन्वोल्यूशनल लेयर इटसेल्फ, राइट। ठीक है। Then, while deeper layers capture the complex structures like cell boundaries, tumors, ये सब। तो याद रखना कन्वोल्यूशनल लेयर्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एजेस हो गया, टेक्सचर्स हो गया, शेप्स को डिटेक्ट किए, राइट। एंड उसके बाद जो हमने यहाँ पे टर्म यूज किया था नो फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स, अब हम यहाँ फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स यूज नहीं करते, फिर भी traditional CNNs and with dense layers that output a single predictions like cancer or no cancer, राइट वहां पे हम फुली कनेक्टेड लेयर्स यूज करते हैं और वो और डेंस में जाते हैं। वो एग्जैक्टली एक ही प्रेडिक्शन, मतलब जो जैसे कि क्या आपका ये पार्टिकुलर इमेज ओवरी कैंसर इमेज, ट्यूमर इमेज ऑफ कोर्स, इज इट कैंसरियस, इज इट मेलाइन और बिनाइन, लाइक दैट। But in FCNs, these are removed so the network can preserve spatial features and work for images of any size. देन हमने बोला था डाउन सैम्पलिंग एंड आउट सैम्पलिंग के बारे में, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। तो डाउन सैम्पलिंग पुलिंग लेयर्स लाइक मैक्स पुलिंग रिड्यूस द रेजोल्यूशन ऑफ द फीचर मैप्स, like a 128 feature map now becomes 64 cross 64 after pulling, reduce कर रहे हैं हम। and क्यों, why it matters, it helps the model capture global context and reduces computation। ठीक है, जैसे आप इसको जूमिंग आउट के साथ कंपेयर कर सकते हो, जूमिंग आउट के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, लाइक जूमिंग आउट ऑन एन इमेज टू सी द बिग पिक्चर। बड़ा सा ये जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा स्लाइड आपको दिख रहा है, इसको मैं अगर आप क्या कर रहा हूँ स्मॉल कर रहा हूँ तो आप पूरा ऐसे देख पा रहे हो, और स्मॉल कर रहा हूँ तो यही हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम वन जैसे आपने देखा 128 पिक्चर्स को 64 कर रहे हैं आफ्टर फुलिंग, सो दैट वी कैन हैव ए लुक ऑफ द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल मतलब पूरा, अभी तो आपको ये पूरा नहीं दिख रहा है स्लाइड में क्या है, अब मैं कम करके जाऊंगा तो आपको पूरा दिखेगा, राइट। देन सिमिलरली आपका है क्या आप सैम्पलिंग, इसको हम deconvolutions or transpose convolutions भी बोलते हैं। These layers increase the resolution of the features map back to the input size like 64 फिर से 128 बन जाएगा। ठीक है, allow the model to make pixel level predictions and that is what we needed for segmentation। और similarly it is a kind of what in zooming in, अभी इन कर रहा हूं दिखाई दे रहा है आपको, तो like that। देन पिक्सल वाइज प्रेडिक्शन समझ में आ गया कि हर एक पिक्सल को आप लेवलिंग करते आइडर ये ट्यूमर होगा या नॉन ट्यूमर होगा। इट ऑब्वियसली दिस इज द गोल ऑफ द सेगमेंटेशन, यही हम करना चाहते हैं। तो मैं वेरी क्विकली आपको ये एफसीएन और सीएनएन के बीच क्या डिफरेंस है बता रहा हूँ। एफसीएनएन का जो पर्पस है, सीएनएन का पर्पस क्लासिफिकेशन के लिए है, लाइक डॉग वर्सेस कैट, बट एफसीएन का पर्पस है पिक्सल वाइज क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब सेगमेंटेशन के लिए। उस इमेज के अंदर एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके क्लासिफाई कर रहे हैं हम, तो वो उस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं FCN। layers has fully connected layers but here replaces dense layer with only the convolutional layer। so output क्या होगा, सिंगल क्लास लेवल और स्कोर पाई में, बाद यहाँ पे हमें सेगमेंटेशन मिलेगा, मैप मिलेगा FCN में। और फ्लेक्सिबिलिटी यूजुअली फिक्स साइज इमेजेस, बात आपका FCN जो है कोई भी इमेज साइज, क्योंकि हमने वो फुली कनेक्टेड लेयर्स को बता दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज साइज के साथ वॉक कर सकते हैं। आर्किटेक्चर आपने देख लिया फ्लैटन प्लस डेंस लेयर, बट यहाँ पे हम यूज करते हैं ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन, दैट इज आउट सैंपलिंग। देन इसका टास्क लाइक आपको मैंने बताया था, इज दिस इमेज ए ट्यूमर और नॉट, बट यहाँ पे तो आपको मिल गया कि आइदर इट इज ए ट्यूमर, मतलब इट इज कैंसर और इट इज नॉट कैंसर। बट यहाँ पे कि इस पार्टिकुलर इमेज में सपोज कौन सा आपका सेल है, कौन सा पिक्सल एग्जैक्टली है जो ट्यूमर में बिलोंग करता है, ट्यूमर टिश्यू में बिलोंग करता है, तो इस पार्टिकुलर वेरी डीप लेवल टास्क के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या, FCN। So CNN learns high level features and classifies whole images, but FCN extends CNNs by upsampling the features map to generate dense predictions over each pixel,
and it is obviously perfect for medical image segmentations like detecting the tumor region. समझ में आ गया? तो मैं एकदम सिंपल में बोल रहा हूँ, CNN हम जो यूज करते हैं ना, पूरा ये जो पर्टिकुलर इमेज आपने इनपुट किया, ये कैंसरियस है, एल्मेलाइन है या बिनाइन है, बट इसी में एफसीएन में कौन सा एग्जैक्टली पार्ट आपका, कौन सा पिक्सेल्स ट्यूमर रीजन में बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसा डीप लेवल टास्क के लिए हम एफसीएन यूज करते हैं. आई होप यू नाउ गॉट इट. So quickly revise it, and if any doubt, then you can ask me. Thank you.